अथ सप्तलोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तशुल्वे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यन्नतः। देव्युवाच त्रिदेवी प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् माया तथैव स्नेहोपप्या स्तुति च प्रकाश्यते। अस्य श्रीसप्तलोकी दुर्गास्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थम् सप्तलोकी दुर्गापाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बालादा कृष्णमोहाया महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हरसि मे सिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मिता मतिमति वशुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्चचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ पवित्रायर्परायणे सर्वाश्रुति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषान्निपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्रामाश्रितायां हृतां प्रयन्ति। सर्वाबाधा प्रशमानं त्रयीश्लाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशिनीम्। श्रीदुर्गाष्टोत्तर शिव उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि ऋषृण्य कमलानने अस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। स ओं सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। अर्या दुर्गा जया चाद्याति नेत्र शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चन्द्रघण्टा महातपः मनोबुद्धिरहङ्कारा चितरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदागति शम्भवी देवमाता च चित्नारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पाटाम्बरपरिधाना कमञ्जनी निरञ्जनी अमेया विक्रमाकूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी नवदुर्गा च मातङ्गी मातङ्गा पुनिपूजिता ब्रह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमृत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भशुभहननी महिषासुरमर्दनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्ववस्त्रमयी शक्त्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकस्तस्य हस्ता च अनेकस्तस्य धारिणी कौमारी चैककन्या च कैशोरी युवतीयती अपौढा चैव पौढा च वृद्धिमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कत्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदे पठे नित्यं दुर्गा नाम च चष्टकम् नासध्यं विद्यते देवी त्रिलोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जयं हयं हस्ति नमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभने मुक्ति शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु धत्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेता परा भक्त्या नमेतामेष्टचष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेर्वेदा देवैः सर्वै सुरैरपि राजानो दासतं यन्ति राजमिश्वासवाप्नुयात् गोरोचनललक्तनकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलेख्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारी भौमस्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्यं प्रापठे स्तोत्रं या पठे सम्पदां पदम्। अथ देव्याः कवचम् ओमस्तु श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यसो मातरो बीजम् दिग्बन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः।
ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् अन्यकस्यचिदाख्यात्मक तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्त्य विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पूर्णं तच्छृणो महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमम् अस्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च शततं कालरात्रि च महागौरी च षष्ठमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उत्तैते तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दशनमासत्तु सत्तु मध्ये गते रणे विषये मे दुर्गमे चैवा भार्यतः शरणं गता नातेखां जायते किञ्चित् नाशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि अस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेखां वृद्धि प्रजायते एतं स्मरन्ति देवेशी रक्षते सन्न संशया प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसंहारूढा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृखारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्त हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्रह्मी हंस समारूढा सर्वभारणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नो वशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधाशमाकुला शङ्खं चक्रं गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधितानां देवानां च हिताय वै नमस्तस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साये महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि तच्छेषु शत्रूणां भयवर्धनि प्राच्यं रक्षतु मामग्नि अग्निनामग्निदेवता दक्षिणे वा तु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणि प्रतीच्यं वारिणि रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनि उदिच्यं पातु कौमारी ऐशन्यं शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेस्तथा वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पिष्ठिता आर्जिता वाम पर्शे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्धेतनी रक्षेद्रुमामूर्धन् व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेदयश्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुको मध्ये त्रयोलोक्ते श्रवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूढे तु शङ्करी नासिकायं सुगन्धा च उत्तरेष्टे च चार्च च अधरे चामृतं कालं जिह्वं च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टानां त्रिघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षीं चेबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नालिकं नलकूवरी स्वाखण्ड्यो खड्गनी रक्षेर्बाहु मे वज्रधारिणी हस्त्र्यो दण्डनी रक्षेदम्बिका चङ्गुलीषु च नाखाच्छूलेश्वरी रक्षेत्कुच्छो रक्षे कुलेश्वरी अस्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्योश्वरी तथा पूतानां कामिका मेढं मुग्देव महिषावाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जुनिन् विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फो यो नारसिंही च वादपृष्ठे तु तैजसि पादाङ्गलेषु रक्षेति पादलेष्टे नवासिनी नखान् दृष्टन् कराली च केशशोभ्वान् रोमकोपेषु कौवेरी त्वाचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जासमन्य मे इष्टति पार्वती अन्त्राणी कालरात्रि च पित्यं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशो कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मेधा शर्वसन्धिनी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छात्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनो बुद्धि रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानामुदानां का समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च सद्वेषस्य च योगिनी शक्तं रक्षास मे शैवा रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति लक्ष्मीश्च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् वसून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भ्रय रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेन् रामार्गक्षेमग्रीस्तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वस्य स्थिता
रक्षहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्तीं पापनाशिनी पादमेकेन गच्छेतु यदि यच्छेत् महात्मना कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्या विजया सर्वकामिकः यं यं चिन्तते कं कं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् पारमेमाश्रितूलं ता प्राशत्ये भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या संग्रमे स्वापराजिता त्रैलोक्ये तु भवत्पूज्या कवचेनामृतः पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठेत् प्रतिं देवं सर्वदेवानि निष्ठया जीवेदं वा शतं संग्रामृत्युमृत्युभिवर्जिता न्यासन्ति व्याधया सर्वे तुलाभिस्फोटकादया अस्थावरं जजङ्घं चात्रैव गत्रीगराचरीम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचरस्यैव जलजास्योपदोषिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तारिश्चा च घोरश्च डाकिन्यश्च महाबला ग्राभूतपि चासस्या इच्छा गन्धर्वराक्षसा ब्रह्मा राक्षसपेताला कुष्माण्डा भैरवादया नाशन्ति दर्शनातस्या कवचे हृदि संसिते मनोनाति प्रवोत्राज्ञाते जुदे तीव्राप्रम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले सप्ततिं चण्डीकृत्वा तु कवचं देवता पुरा यादृतं देवदेवानां सर्वदेवानि कानिकं त्वतिष्ठन्ति मेदिन्यं सत्यपुत्र द्रपौत्रकी देहन्ते परमस्थानं यस्तुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथ कीलकम् ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बापित्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे च विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्रमितनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतज्जनीयन्दा मन्त्रमाभिर्बालिकाम् सोऽपि सोपाप्नतो सत्यं सात्यते सत्यसत्परा सिद्धया तु सदा देनी वस्तुनि सकलान्यपि एतेनास्तु ता देवी स्तोत्रमन्त्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकाम् संग्रामे सिद्ध्यति यन्ति लोकसङ्केतुताहरा कृत्वा निमन्त्रमास सर्वमेवमिदाशुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकारसा समाधिनानं पुण्यस्य तं यथा निवाडुनाम् सोऽपि सोप्नातु सर्वमेवं नातिदेन निशंसया कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टयां वा समाहितानुसन्धिता ददाति प्रतिगृह्णाति अन्यदेक प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलतम् यो निष्कीलं विधायेनं नित्यं साम्प्रति सम्पुटम् सा सिद्ध्या सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न स्वप्यातस्य भयं क्वापि जायते नाम मृत्युवशः याति मृत्युः सोऽपाप्नुयात् गित्वा पारभ्य कुर्वीत न कृणो न विनेष्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य बुधै सौभ्याज्ञायाति किञ्चिन्द दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन सम्प्यमिदं शुभं सैन्यस्तु जप्यनेशस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चिकैः भवेत्येव समग्रापि ततः पारभ्य तत यस्सर्यं यत्प्रसादेन सौभारोग्यारिसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्षा स्तुने साकितावितैः। अथ अर्गलास्तोत्रम् ओमस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे च विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते जय त्वं चामुण्डे विच्चे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटविद्रा च विविर्दार्ते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिराळक्षे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भशैव निशुम्भस्य धूम्रच्छस्य च मर्दनी रूपं देहि जयं
जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वतीन्द्रागी युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यारूपचरिते च सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अस्तु अभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं व्यक्त्वा मार्चितीत्या भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्वेषितं नाशं विदेहि बलमुच्यकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ना नृगाघश्चरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावान्तं यशस्वान्तं लक्ष्मीवान्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यत्रापघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्ता संस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्थिते देवी सत्सशक्त सदात्मिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतनाथा संस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति भद्वा पूजितो परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोतम्ब तन्ददन्द्योतताम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरा सा तु सप्सा सती सख्या वरप्राप्नोति सम्पदाम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ॐ प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिरत्तान्दिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्य रूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् छोलम्बुसुण्डीं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतं नीलस्मद्दुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तस्य पिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डे उवाच शावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकत इष्टमः निशामयं ददुत्पत्तिं विसदादगदितो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपा सा भावुआ महाभागा सावर्णिस्तन्वेरभे सोरोचिकन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवा सूरथो नाम राजा भुत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालायतः अस्माका प्रजापुत्रनिमैरशान् भावुशात्रो भूपा कोलाविन्ध्यासिनस्तदा तस्य तैरभवति युद्धामति प्रबलदण्डिनः न्यूनरैपैवतैर्युद्धे कोलाविन्ध्यासि विरजितः तथा सा पुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आकृता सा महाभागा प्रभस्ते प्रबलार्भिः अमर्त्यैबले दुर्वृत्तस्य दुरातेत्या दुरात्मिभिः कोशो बलं चाहृतं तत्राविश्वा पुरोहुतत् ततो मृगव्यहेजेन हवतः शम्या भूपति एकाकी हायमारुष्या जागहं गहनं वनं सा तत्रामसीच्छेदं द्विजावश्यानमेधसा प्रशान्तशापदाकीनं मुनिशिष्यो वशोभितं तस्थो कालीकलालं चातेन वेन सदा कृता उद्धरो चावितं देवं सर्वकार्यार्थसेवता इचस्ते तर्प्रियस्सन्तासरासिन्नावनाश्रमे शोचिन्त्य दयातावात्रामत्र किश्चन्न चेतना मत्पूर्वं फलितं पूर्वं मायाहीनं पुराहि तद् मदवृत्तैः स्वाश्वेतां सोल्वेतां प्रसानः ना जाने चा प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरीयसा यातान् कान् भोगान्नुलाश्यते
येन मामून्गतं नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं धुवद्या मे ग्रहभृत्या विवावृतम् असम्यासाशिलैर्दे कुर्वद्दिं सततं वयम् सच्चितासोति दुःखेन छायं गोषो गमिष्यति एतत्ते च सतत्पित्रं त्रियामायास्य पार्थिवा तत्र विप्राश्रमे स्वेकं पैश्रमेकं ददर्श सा पृष्ठेन कस्वत्तं भोयेत्तु गमनेत्रका सशोक इव कस्मत्तम् इमान इव लक्षसे इत्थकल्लावचस्तस्या भूपते प्रणयोदितं प्रातिवाचा शतं वैश्वा प्रसान्वानुतो निपं वैश्युवाच समार्धिनामं वैश्यो हतवुत्मोधानिनं कुले पुत्रदारे निरस्तस्या धनलोभा ददामि विनिश्या धनैर्धारे पुत्ररादाय मे धनं वनेभ्याय गतो दुःखी निरतश्चन्दवावति सोऽहं नावेदि पुत्राणं कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वासजानां च दारुणं तत्र संसिता केनु तेषां गृहे क्षेमं मक्षेमां कुर्न सम्प्रता कथं चेकृतान् देवान् सोमृता चे सुतारुतं राजोवाच यो निरस्तो भवालुब्धो पुत्ररादामि मे धनं तेषु किं भवता स्नेहं भ्रावृतिं देधिमानसं वैश्युवाच एवमेतत् तथा प्राह प्रसन्नाखवावचा किं करोमि न वर्ध्याति मम निष्ठुरतं मनः येन सज्जाते प्रत्नेहं धनलुब्धे निराकृतः प्रतिस्वाचरितहृदि शक्ते त्वामना किमेतन्नाभिजानामि जगन्नामपि महात्मते यत्प्रेव प्रवर्णं ता चित्तं प्रावेशवन्दुखु ते कुकीते निवश्वासो धर्ममन्नस्यन्न जायते करोमि कीयतामत्तामनिर्मिष्टिर्निष्ठुरं मार्कण्डे उवाच ततस्तौ विप्रमे देवे समुनि समुपस्थितौ समाधिनानं वैश्यसो सा च पार्थिववस्तमः कृत्वा चासा तु यन्थ्यायं यथायं तेन सम्पिदम् उपविष्टो कथायाचिन्क्रातिरो वैश्वपार्थिवो राजोवाच भगवान् वस्त्रवृक्षामि कृपत्यस्याततौ दुःखायन मे मनसा साचयात्यनापना मत्वा गतराजस्यारङ्गवे सन्धवेऽपि जानतोऽपि यथज्ञासा किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निर्कृतः पुत्रे दत्तराया निसञ्चिता स्वाजनेन सुरक्तेन हृदि तत्निवेशता एवमेषं तथायं च दुःखादिष्कन्ददेवसो दृष्टोऽपि विषये च मर्त्वा कृत्वेन सेवितम् ज्ञानमस्ति समस्सन्त्याजन्तर्विशेषगोचरे विषयश्च महाभागं यथा चैव पृथक् पृथक् दिवन्धा पाडिना केचित् तथा देवा तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ पडिन्तुल्यान् दृष्ट्यः गानिजो मनुजं सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि गानिजा सर्वे प्रसूपाक्षी मृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणामभिशोभितं मोहितौद्रादेशं धर्मदेवानुसन्निधा आवं जायिनि यत्पूर्वे सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच इत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रताभृता यत्ता चक्षेण वैचिन्नी जघ्ने जघ्नशेषतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संसुता स्वयं प्रभामश्च देव्या ते सुनं भेजुयुताति इति मार्कण्डे पुराणे शाम्बरिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमोऽध्यायः। ॐ मध्यं चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकाम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजम् आयुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्य रूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रपाठे विनियोगः। अच्छस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नानहम् सेवे शैरभिमर्दनीमियमहां लक्ष्मीं सरोजिस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरम्भुसो युद्धं पूर्णशब्दं शतं पुरा महिषासुराणमाधीपे देवानां च पुरन्दरे तत्र सूर्यै महावीर्यं देवशन्नं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रोभुन्महिषासुरा ततः पराजिताः देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतस्तत्र यत्र ते गरुडध्वजौ यथावृतं च तोत्वैतं महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः काथयामासं कश्च देवा न विस्तरा सूरेन्द्रवाग्नादश्च वरुणस्य च वरुणस्य च अन्येखां चाधिकरन्तैव श्याममेवाधितिष्ठति सर्वान्निर्कृता सर्वे तेन देवगणामुभिः विचरन्ति यथामर्त्या महिषेषेण दुरात्मना एततः कथितं सर्वा ममारीचेन चेष्टितं शरणं वा प्रसन्नास्मो वधस्तश्च न चिन्तयम् इत्थं निशम्य देवानां वाञ्छसि मधुसूदनः चकारकोपशुम्भुश्च भृगुटिकुटिलादनौ ततोऽतिकोर्णपुण्डस्य चक्रिणो बन्धदन्तितः निष्कामा महत्तेजो ब्राह्मणा शङ्करस्य च अन्येखां चैव देवानां सकृदीनं शरीरतः
निर्गतं प्रोवितं देवं त्रैलोक्यं सा समक्षतः अतीवा तेजसा क्रूटं ज्वालामेरुव पार्वतं दादुदुष्टे गदत्तस्सा ज्वालाव्यप्तदिगन्तरम् अतुला तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तत् भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिखा यतवोक्षा भयं तेजो दापितं तानि षण्मुखम् सौम्येन सा भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन हस्तयो युग्मं मध्यचन्द्रेण चाभवत् वरुणेन जगद्घोरो नितं तेजस्ना भुवा ब्राह्मणा तेजसा पादौ तनलेकन्धतेजसा पशूनां चाकरुङ्गाल्या कौबेरं च नासिका नन्दस्तु दन्ततं पूजा प्रजापत्येन तेजसा नियन्त्री जज्ञया यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवो चासन्दयो तेजा श्रवणावनिलश्च च अन्येखां चैव देवानां शम्भो तेजससा शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां त्रम्बिलोक्यामुदं प्राप्नुमावृतं महिषार्दितः शूलं विनिष्कृष्य तदौ तश्च पिनार्धिक चक्रं चादत्तवान् कृष्णदेवानिचक्रतः शङ्खं च वरुणासक्ति तदौ तस्य हुताशना मरुतो तापवश्चापं वाणवाणी पुरेष्वति वज्रमिन्द्रा समुत्पद्य कुशलासां दिवाभृतः तदौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरौदगाजितः कालदण्डाडमोदण्डा पाशसां प्रजापतिश्चमालं च ततौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्तरोमकोपेश निरञ्जेन दिवाकरः कालश्चादत्तवन् खड्गं तस्य शर्माज निर्मलम् क्षीरो देवात्मतं नारमाजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रा तथा शुभ्रं केयूराजमुनाकृतं नूपुरो विमलो तद्वा तैलोक्यासा निर्वृत्तमम् अङ्गलीकाग्रवत्नानि समस्तेवान् शङ्किता विश्वकर्मा तदौ तस्य परशुं जात निर्मलम् अष्टनेकाशरूपाणि तथा मेष्टानि दर्शनम् पाङ्गलिषेन्मालिंसा श्रीददासीदचापरा अदञ्जीला तदैतस्य पङ्कजं जाति शोभनम् हिमवानं वाहनं च सिंहरत्नाविधानि च तदा वासोन्ननसुरया पानपात्रं धनाधिपा शेषस्सा सर्वनागेशो महावाणी विभूषितम् नागहारं तदौ तस्य धत्ते च पृथिवीमिमम् अन्यनैरपि सुरैर्देव्यै पुन्तदेवा सता तथा समानीतः नगादोचैः षण्डहासं मुहुर्मुहुर्तश्च नादेन घौरेणा कृतान्तिपूरितं नभा अमायन्ता महतं च प्रतिशब्दो महामृतम् चुक्षुभु सकलालोका समृत्या चकाम्बिरे चाचला वासुधाशेलु सकलश्च महीधरा जायति देवश्च मुदाता मुस्लिमाहिनी अङ्गवामेशता देवं सिंहदेवानुसंगिता हतस्ते सा तथा देवं सर्वदेवानुसंगिता नूपुरो वोमुलो देवं सर्वदेवानिसंजिता जुजोभुस्सहस्रेणा सबन्तापनिशंसिता ततः प्रवर्वतो युद्धं तया देवानिषद्वितं सहस्रेमृतं देवं रक्तदेवं दिगन्तरं महिषासुरसेनानि शूराख्यो सा महाशुरा योदर्विडालावितानां च गङ्गदेवानिसंगिता वृतोराथानकौट्यं च युद्धसाम्यनिबाधितम् विडालाख्यो युतानां च पञ्चशद्भिरावृतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च सत्रयोधुषो रथनागा बहिर्वृतः अयुधु संयुगो देव्या सा तत्र च महाशुरा कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिना तथा हयानां च वृतो युद्धं तत्र भुन्महिषासुरा कौमरो प्रिन्दिपालिश्च शक्तिबिन्धा सथा तथै युधु संयुगो देव्या खड्गै परशुपाटिशै केचिज्जचिपिपाशक्ति केशदान्द्रे तथा परे देवी खड्गप्रहारेस्तु ते हन्तुं पाचक्रकमौ स्थापितेऽपि सहस्रेण शक्तन्ते न संगिता एतश्चानै महादेवं सर्वदेवानिसंगिता उतरो वोमरो देवं सर्वदेवानिसंगिता मुमोचसुरदेवेषु शस्त्राणि च सरेश्वरी चोऽपि क्रुद्धो सुतासाटो दिव्यावाहनकेसरी चाचुरासुरसैन्येषु हनेनिश्च हुताशना निःश्वानामुमचो यश्च युद्धमाना ऋणम्बिका सा एव सद्य सम्पूर्णा गढशान्तिसहस्रशा योधुतस्ते समद्यश्यं सार्लिचिदा निपाटिशै नाशयन्तो सुरगणान् देवीशक्ति नवृहृता मृदक्ता तथैवन्ये तस्मिन् युद्धे महोशये देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिविष्टिभिः खड्गदेवीश्च हतश्रोता निजघान महाशुरान् पातयामास चैकन्या घण्टा स्वान्यमिहोहिता असुरान् भुवाभूमि प्राचदेवानिसंगिता केचिद्दिवा तथा रात्रौ मणयान्तुल्यनदिष्टया श्रींसन्तु प्रेतुमादृद्ये मध्ये विदारितारिता एकद्देवा सता देवं धर्मदेवानुसंगिता कबन्धायुधदो दिव्या गृहीतामरमाहृदा नानितश्च परे तत्र युद्धो सूर्यतलाश्रिता कबन्धा शिरसा खड्गा शक्तिविष्टा निपाणयः
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्मे महिषासुरा पातितो रथनागश्च शरैस्तेव वसुन्धरा अगम्या सा भव तत्र यत्र भूस्महारिणः सोणितौघा महानाद्यः सर्गतश्चारुष्टुभु नद्धे चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां छडेन तन्महाशन्यामसूरां तथाम्बिका निन्ये क्षयं च तागृतं भग्निजातिर्वस्त्रितं सा च सिंहो महानादा विदन्धिकधृकेशरा शरीरेभ्यो मराणीवामशानीमविचन्वति दिव्या गणेश चातस्थं क्रुद्धं युद्धो महासुरै अथेकांशो ततो दिव्या पुष्टविष्टभुद्भावति ओमिति मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। ओमुद्यतभानुसहस्रकान्तिमरुणां क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं घनात्वविलससीतां सुतुल्यप्रभं देवी बद्धहिमांसमुत्नुरगितां वन्दे रवेन्दिष्ठिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यं मैलोक्या महासुरा सेनानी चेच्छुराकोपादितोऽग्रतन तथाम्बिकां सा देवी सर्ववर्षैराववर्षे समिरासुरः यथा मेरुगृहे सिंहं तोयवर्षोऽडतो यदः तस्तस्थित्वा ततो देवी लीलैव शरोत्करान् जघानतुर्गणान् वैडय्ययन्त्रं जापि वाचिनां चिच्छेदा च धनुषाद्यो ध्वजं जाति समुच्छितम् विविधा चैव गत्रेषु छिन्नवन्पादिपाशिगै छन्नैर्धन्वाभिराथो च हताशो च सुवारथी अब्धावत तं देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमत्या न खड्गेन तीक्ष्णधर्नेन मूर्धनि अजगान भुजो दिव्ये देवी वाहति वेगना तस्य खड्गो भुजं प्राप्य पफालं निपनन्दन ततो जाग्रह शूलं च कोपदारुणलोचना हिच्छेपा च ततस्तु भद्रकालं महासुरा ज्वालजामान तेजोभिरक्तनिर्मया सर्वोचिता दृष्ट्वा तदा पताच्छूलं देवी शूलमुच्यतं तच्छूलं सा तथा तेन नीतं च स महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य समूहतो अजगामा महाराजतिश्चक्रते सनर्दना सोऽपि निद्रापता देवं सर्वदेवा निशप्रभं भग्नशक्तिं निपातितं क्रोधाक्रोधसमन्वितः चिच्चेपा चामरः शूलं वल्लिजापप्रसन्निता तथा सिंहसमुत्पत्त्या गजगन्धुम्बान्तरिस्थिता बहो युद्धेन युद्धे मे तनोदेर्नसारिणा युद्धमानौ तदौ तश्चो वक्त्रवानिन्महीगतौ यूधतष्टे सुरारब्धे प्रहरैदारुतदारिणैः ततो वेगात्कमुत्पत्त्या निपत्या च मृगारिणा करप्रहारेण शिरमस्या कृता देव प्रथाकृतम् उद्रगैश्चारणे दिव्या बिलाविच्छादिभिर्जिता दन्तमुष्टितलेश्चैव कालरश्च निपातिता देवी क्रुद्धा गदापादैः सूर्ययामशोद्धतम् वष्कालं बिन्धिपालेन वैड्यताम्रं तथान्तिकम् उग्रस्यामुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघना परमेश्वरी विडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभै सैन्यरिष्टे समासितम् ओद्धदेवा सता देवं सर्वदेवानुसन्निधा एवं साक्षीयमाणे तु सौसस्यन्महासुरा महिषेणास्वरूपेण त्रायामाश निकापिना कश्चिदुण्डप्रहारेण सुरभेश्चन्ति चापिना नाडगोपा सता देवं सिंहदेवानुसंगिता सिंहन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्या सूरचूर्णमहीतलः सिंहम्भ्या च सरोच्चभ्या शापिदा च निशापिदा सिंहसिंहामहरेन्दं च खण्डं खण्डं युधार्धना सा च नीलाश्च साताशो निपतिश्च बहुचला इति क्रोधासमध्यश्च मातयामात्महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपाद्वादिदासे तदोत्करा सा छित्त्वा तत्र देवेश बन्धदा तेन्महासुरं त्याज्यं महिषारूपं सोऽपि वृद्धो महावृदे ततो सिंहो महोत्पायो कौपदेश तथाम्बिरा छिन्नस्थित्वा तदा पुरुषं गर्गदेवा निषन्निधा कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निकार्तिता ततो माहासुरो भूयो महिषावपुराश्रिता तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सा चराचरं तथा कुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् आपौ पुनः पुनश्चैव जहारारुणलोचना नर्दा चासुराशोऽपि बलवीर्या मदोद्धृतः विष्णभ्या च चिक्षेपा चण्डिका प्रातिभूधरान् सा च तान् प्रहस्तेन चूडीयन्ती सरोत्करै उवाच तं महोद्धेता मुखारागकुलक्षरं दिव्यौ
उवाच गर्ज गर्ज षडं मूढामायुधमायुतमाप्रहं मया त्वयि हते तत्र गजीष्वन्नस्य देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्या समुत्पत्त्या सारूढं च महाशुरम् आदिने कन्यकण्ठे च शूलने व सरोत्विदा अर्धनिष्काद ईषीदा देव्यदेशेन संवृता अर्धनिष्कान्द एवासो युद्धमासो महाशुरा तया महाशिना देव्या शिरचित्वा निपातिता ततो हाहाकृतं सर्वं सैन्यसैन्येन नाशिता रहस्यं च परं जग्मु सकलदेवतागणा दुष्टदेवासुरै देवी सहा देवानि महर्षिभिः हतो तस्मिन् जगौ गन्धर्वपतयो नारदश्च गौगणा ओमिति मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। ॐ कालाभ्रब्बां कटक्षैर्गुदवैदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपालं त्रिशकमपि कार्दुहन्तीं तिनेत्रम् सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयख्यां त्रिदशवृतां सेवितां सिद्धिकामयि ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयासुरगणा निहते ते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मे सुरारिबरालिदेव्या तां दुष्टुः प्रणतिनम्रधिरोधरासां वग्भिः प्रहस्यपुलदेवमचारुदेया दिव्यायया सतमिदं सगदं च शक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूर्तमूर्त्या तामाम्बिकाखिलमखिलमहर्षि पूज्यं भक्त्या नतास्तशुभधातु शुभानिदां च यस्य प्रभावमातुलं भगवानन्तो ब्रह्महरश्च नहि वक्तुबलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभं वश्यं करोति या शेषयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनस्पभुवस्य लज्जा त्वं तं नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयामि तव रूपमचित्तमेतत् किं जातिवीर्यमसुरासुगनानि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तव अद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरगेषु वडादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापदोषै नागायसे हरिहरा परिपालनाय सर्वस्याखिलविदं जगदंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमद्या यस्या समस्तसुरता सुमदीर्णेन तृप्ति प्रयन्ति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य तृप्तहेतुरुच्चर्यसे त्वगवदां नविनाशिनाय नाशाय तां सम्पदा जनपदेषु धनानि तेषां यशंसि नचिता धर्मवर्गा धन्यस्य तान्वितासिदारा तेषां समद्भुतता भवतीं प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सतैव कर्म प्रत्यादितः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति रततो भवति प्रसादा तैलोक्यत्रेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मिता हरसि मे सिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मिता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा च चित्ता एभिः स्वतैः सद्गुप्तां सुखं तथैतैः कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयन्तो मत्वेतनूनतानि विनाशि देवी दिष्टु कितुं भव भगवती प्रसन्ना सर्वासुनाभि सुखदेन सनाति हेतु रूपं तथैमचिमतिल्यमतुल्यमानै वीर्यं च हृतुदेव पराक्रमारं वैरस्वपि प्रकटितैव दया तथेतं केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्राचित्ते कृपा समरनिष्ठुरतं च दृष्ट्वा त्वामेव देवि वरदे भुवननेत्रेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशिनेन नातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतं दिवा नृपुर्गणा भौमस्य पास्मामस्मान्दे नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटासुनेन नापाहि जापज्ञाने सुरेण चा प्राच्यं रक्ष प्रतीक्षा मे चण्डिके रक्ष दक्षिणे भ्रमणेन सुलतस्य उत्तरस्य तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि छत्राणि घोराणि तै रक्षन् सन्द्वाभुवं खड्गशूलगदादीनि यानि छत्राणि ताम्बिके करपल्लव संज्ञानि तैरस्मन् रक्ष सर्वता ऋषिरुवाच एवं सुदासुरै देवी कुसुमवन्दनद्वाब्दे आर्जिता जगद्धात्रीं तथा गन्धनुलोपिनै भक्त्या समस्तुदित्तं मे अष्टधूपैतुधोभिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तेन सुतानिता दशगन्धर्वता देव सर्वदेवानि चन्दं ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देव जगतो तथात्मना इत्येताग्रभद्रकाली भवन्ति स्वानिपा इत्येता कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्तष्टिन्नवैश्री पुनश्च गौरीदेहा सा समुद्धुता यथा भवत् इवधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तच्चतुर्णं महाख्यातं यथा कार्मिवताविते इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः।
ओमस्य श्री उत्तरक्षत्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तस्तं सामवेदस्य रूपं श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् हस्ताजय ददतिं घनत्वविलसच्छेतां सुतुल्यप्रभम् गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिनीम् ओं क्लीं ऋषिरुवाच पुराणशुम्भमसूरभ्यामसूरभ्या शशीपते त्रैलोक्य यज्ञभागस्य हृतामादिर्मामृत तावेव शौर्यतं द्वादं दधिकारं तथैर्वहं तौ वीरे मथोऽयं चक्रते वनुडस्य च तथैवापावनृद्धिं च क्रक्तोद्धर्वामि च ततो देवाभिनिर्धूता भ्रष्टराजा पराजिता यदादिदिक्रातुभ्यं सर्वे देव निराकृता मसूरभ्या तं देवी समरन्त्या पराजितं ते अस्माकं वरो दत्तो यथा पाशस्मृताखिला भावतं नाशयिष्यामि तच्छडत्तर्वावदम् इति कृत्वा मतीदेवं निहिमाङ्क्तं नागेश्वरं जगतस्था ततो देवी विष्णुमाया तदुष्टुभो दिव्यो उवाच नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिर्भद्रायै निहता प्रणता स्मता रुद्रायै नमो नित्यार्यै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योतिन्यै चन्द्ररूपै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रार्थं वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यं भूभृतं लक्ष्मै सावर्णै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिणी तथैव कृष्णायै द्रुम्रायै सततं नमः अति सौम्यातिरो रुद्रै नमस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैत्यकृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्राणामाधिष्ठाने भूतानां चाखिलेषु च भूतेषु सततं तस्यै व्यक्तिदिव्यै नमो नमः ईतरूपेण यकृत्नामेतदं व्यावृता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरै पूर्वामाधिष्ठाश्रया तथा सेवेन्द्रदीनेषु सेविता सा सेविता करोतु सा सुभाते श्रीशुभानि बद्धजापदा या सम्प्रदासोद्धतं च प्रते सर्वदेवता ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती अस्तुभ्य वातो युषा च अभ्यं निपनन्दना सब्रवृत्तान् सुर्नाना सुब्रवर्ति सुयत्रका शरीरकोशस्तस्य सब्रवेता विविच्छवा अस्तोत्रं मामि तत्क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतै देवै समितै समरे निशुम्भेन पराजितै शरीरकोश दत्तस्य पार्वतस्य निताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्य विनर्गतायं तो कृष्णमुपसि पार्वती कालिकेति समख्यातं हिमाचल कृताश्रया ततोऽम्बिकं परमं रूपं सुमनोहरं दर्शचन्द्रमुण्डस्य भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो तस्य शुभया सख्यातम् अतीव सुमनोहरा कातस्ते श्रीमहाराजा पाशयन्ति हिमाचल नैव दाद्रिक क्वाचिद्दातादिष्टं केनमुत्तमं ध्यायतं काप्यसो देवी गृहीतं च सुरेश्वर स्त्रीरत्नामती स्वाङ्गे दोद्ययन्ती ध्रुवादिका सा तु तिष्ठति देवेन्द्र तं भगवान् दुष्टमहर्षि यानि रत्नानि मार्यो गजराश्रीनिया प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे एरावत् समानीतो गजरत्नं पुरुन्दरा प्रजापरितकन्दश्चर्कवतश्चिन्वाभय हिवानं हंसयुक्ता वेतिष्ठं धर्वाङ्गुरे रत्नभूता विहानितं सम्भदेवानुसंगिता
ओ देवा सवा देवं सर्वदेवानुशङ्किता एतस्मिन् ततो देवं सर्वदेवानुशन्दिता अवलिप्तान्वतो देवं सम्प्रदेशमाकृता त्रैलोक्या भवत्यष्टा शुम्भनुशुम्भयो अन्ये कामपि देवानां सर्वदेवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवा पुण्यश्लोकिता इन्द्राद्या सकला देव सदातो अनसंयुगे शुम्भदीनं कथं तेकं स्त्री प्रयसि सन्मुखम् हतो देवा ततो देवं सर्वदेवानुशन्दिया सातं गच्छा भयोद्युक्ता पार्षनिशम्भयो केशकर्णान्धनिर्धूता गैरवसा गमिष्यति दिव्योवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भ जातिवार्वण किं करोमि प्रतिज्ञा मे दानिवानुहृतं पुरा सातं गच्छाभयोक्तं तस्य रश्मिन्मारिता तस्य तिस्वा सुरेन्द्रसा युक्तं करोतु सा इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणकरे देवी माहात्म्ये पंचमोऽध्यायः। ओम नागाधीश्वरविष्टराम फणिफणोतं सोरुरत्नावली भस्वादे हलितं दिवाकर निभं नेतत्रयोद्भासितं मालाकुम्भकपालनीरजकरं चन्दार्धचूडां परं सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गनिलयं पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच इति कर्णावचो दिव्या साधुतोमर्षपूरिता समचष्टा समज्ञामादित्यराजयविष्टरा तस्य दूतस्य तत्कृतामकीर्तन्यसुरादिता शक्रोधा शाम्रहाद्यन्त्यनोपदुर्नोल्चना विच्छिन्या बहुशीर्षिनाक्रियतेन तथा परे पापौचारुधिरं कोष्ठादन्यकं दुतकेसरा छडेन तद्बलं सर्वं छायं नीतं महात्मना तेन केसारिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना छित्त्वा तामस्त्रं दिव्या निहतं ध्रुमलोचनं बलं चाचायितं कृष्णा देवी केसारिणा तथा तुकोपादित्यधिपति शुम्भा प्रातुस्वादरा अग्निपायसता ततो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बले पर्वे परिवारितौ तत्र गाच्छत् तथा जुजं सामरीतनतालगो केशग्वा किस्वातावदत्यं संशयो युधि तथा शेखायुधै शूलकवत्यस्यम्या तस्य हाताय दुष्टायं सिंहे च विनिपातिते सिंहमागम्य बद्ध्वा तो गृहीत्वं तथाम्बिकाम् इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। ओम नमः चण्डिकायै। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पटितं शून्यवतीं श्याममालिङ्गीं नस्तैकाग्रिगं सरोजे सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहजारावल्लवाधं रघुवच सच्चोलिकां रक्तवस्त्रं मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमद्भुतं चित्रकोद्भासिभालम्। ओम ऋषिरुवाच अज्ञतस्ते ततो दत्या चण्डपुण्डपुरोगमः चतुरङ्गपलोपेता सन्ददुष्टा विवाविदा तादिदृष्टो ततो देवी मिषुद्वासं व्यवस्थितं सिंहस्य परिशैलेन्द्रे सिंहमाहति कञ्चने ते दृष्ट्वा तं समुद्धातु मोद्यं चक्रुरुद्यतः आकृष्टा चाप्रधीरस्ते तथैन्ये सतिमाविदा ततः कोपाचकारो च चुवेदनर्सनाप्रति कोपेन च शतं वदनं महिमर्डं भूतरा भृगुटिकुटिला तस्या ललाट फलकादृतं कालीकरालवदना निश्चितकान्तसुचासिनी विचित्र खट्वंगधारा नाना महद्भूषणा द्विपी चर्मा परिधाना शुक्रराहति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्न रक्त नयना नादुर्वासिन्मामुका सा वेगेनाभिपातिता घातयन्तीं महासुरा सन्ने तत्र सुरारीणामशिशिवा तथा बलम् रो देवा ततो देवं संगदेवानुषंगिता पाशिगह्या कुशाग्रायो या घंटा च समान्विता समादाहिकहस्तेन मुखे चिच्चेपवारणा तथैव चोग्रे रथान्न शरीरासता निशम्या वक्त्रे दष्टे शिवसिद्धयित्व भैरवम् एवं जाग्रं किश्यको ग्रीवायं सादिशा परम् आदेन कम्य सुरातेमा सुभतिन्तावता तै मुक्तानि शस्त्राणि सहस्राणि तथा सुरै मुखेन जाग्रहारुषा दशादिशिन्नाप्रति बलीनां तद्बलं सर्वमसूरां दुरात्मनां ममर्दा वाचेन्द्रकवतश्चिन्भाविता असिना निहता केचित् तथा कुङ्गन्भाविता जगोमिन्दस्मासुरा दन्तदग्धनिभिस्तथा छडेन तद्बलं सर्वमसूरां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिवद्रुहा तं कालीमतिभीषणं सर्ववर्षे महावीरा भीमाक्षिन्तं महासुरा साधयामास चक्रस्य मुण्डशिक्षोर्हास्त्रसा तानि शस्त्राणि विश्वानि सन्नमुखस्तन्मुखम् अबुर्ध्यानानि विव्यानि शहुदानि घनोदरं ततो जाह सतीरुषा भीमं भैरववादिनी काली करालवक्त्रा दुरसा जातुजड्बला उत्थाय सहसी देवी कलशंभावितं गृहीत्वा चस्य देवेशो कवस्यन्न स्वामिता अथ मुण्डोभ्य द्वावत्तं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं तादृष्टो स चतो देवं खड्गविहति आरुखा हते तेषां तथा संध्या दृष्ट्वा चण्डनिपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो वेजे महायातुरं
धीरस्या काली च गृहीता पुण्डमेव च प्राह प्रचण्ड सुमुदाजगवत्यश्चिन्न चण्डिका माया तवक्त्रपाहत्तो चण्डमुण्डो महावसु यद्धोग्ये स्वयं शुम्बानि शुम्बं चाहनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्ड महासुरो उवाच काली कल्याणी ललिता चण्डिका वचः अस्मा चण्डा च मुण्डं च गृहीतं चान्दुवागृता चामुण्डेति ततो लोके ज्ञातदेतं भविष्यति इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षट्तमोऽध्यायः। ओम अरुणाङ्करुणातराङ्गताक्षिं घृतपाशाङ्गुरुत्वाडचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतं मयुक्तैरहमित्तविभावे भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च छन्नेषु सहिते सरेश्वर तथा कोपापराधीना चेतः शुम्भ प्रतापवान् उद्योग्यं सर्वसंज्ञानां दैत्यनामादिदेशः अद्य सर्वान् बलै दैत्या खटशीषि दुवागुगा कवूनां साकृतं देवा स्वादवैली द्वावृता कोटिवीर्याणि पञ्चशदा सुराणां कल्त्रवागितं शतकूलानि ध्रुवमाणं निर्गञ्चं तो समाज्ञया कालकादोषतामर्या कला तेजः तथासुरा युद्धया सज्जा निहन्तुं यज्ञया तारितं मम इतो गङ्गासुता प्रातो शुम्भा भैरवसुवासना निर्गमकृतासन्नं कवत्ते सन्वावृता अयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सन्न्यं महावितं सौन्नस्ते पुरामासा धरणी गगन्त्रं तासिंहो महानादामतीवा कृतवान् नृपा घण्टासुनेन नाचभ्ये कवत्यस्सन्निर्वावृता धनुजया सिंहण्टानां नादा पूरतृमुखा निनादै विष्णुः काली जिघे विस्ता निवेशरा ततो देवा ततो देवं सर्वदेवानुसंगिता ततो देवी सिंहस्ता काली शौर्यस्परिवारिता एतस्मिन् भूमा च विनाशाय दुरादिशिं ब्रह्मशक्ता सुव्रातितं नाम वीर्या बलान्विता ब्रह्मोऽस्तु गुह्य विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो निष्कम्य ततो चण्डिकायु यस्य देवस्य यद्रुतं यथा भूषणवाहनं तथैवात्याश्रितं देवं हंसयुक्ता जुडावृता हंसयुक्ता विनानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो अयता ब्राह्मणा शक्ति ब्राह्मणी समधीयते महेश्वरी विखारुणा त्रिशूलावरधारिणी महावीवालला प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तहस्ता च मयूर वरवाहना त्वं भवातो दैत्यना तथा स्वाविता यथैव वैष्णवी शक्ति च गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्र गदा सामिवाहि स्वामितो यज्ञवारः मातुलं रूपं च अभिवृतो हरे भक्तिसौप्याव तत्र वाराहिमिवृतं नुत नरसिंहे नरसिंहस्य बिभ्रति सादृशा वपु प्राप्तं तत्र स्वातिता शक्तिशिखा विषयवता हन्तविद्यात् शीघ्रा च प्रकृत्या सन्न चण्डिका ततो देवी शिरदस्तो निष्कान्ता भीषणा चण्डिका सन्धिरुद्रग्धा सुसंविता अतो तस्मिन् महावीर्यं सर्वदेवानुसन्धिता साक्षात् धूम्रजटिला सा मिशाना पराजिता दूतं तागच्छ भगवानापाशान्नुसुम्भयो ब्रूहि सुम्मन सुम्भच्चा दानवातीयमावृतो ये चन्ये दानवतस्य युद्धया समुपस्थिता त्रैलोक्यामिन्द्रो लभतं देवा सन्तोर्विभुजा युवं प्रायतं पातालं यादृशे विच्छिता बलापावृतमहत्ता कवत्यस्सिन्धैव सर्वदा अस्मिन्ता विहता देवं सर्वदेवानुसन्धिता महर्षा पूरिता जगद्वता निकत्यानि स्थिता तथा प्रथमेवाग्रे सर्वशक्ति निर्विष्टिवि वर्षा दामाशं देवी मारन्वाव्रया सा चातानि प्रहस्तेनावानचुल्ला सुव्याविता शिच्छेदालीलियाध्वानर्कवैत्य सिन्वावि तस्य ग्रातस्थकाली च शूलपाति विदारिता खट्वङ्गा विपोदे नासारतीन् कुरुभात्यदा कवण्डोलो जुला प्रेता कवत्यस्सन्हुतासना ब्रह्माणि चक्रहोतुष्णा हेनेन स्वावती महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यजघ्नान कौमारिता शक्त्या स कोविदा ऐन्धिकुलेष्णपातेन हतस्सो दैत्यदानवा पेतुवेदारिता पृथिव्या कवत्यस्सिन्भयसदा तुण्डप्रहाणवीरश्चादष्टकालिर्वाचता वाराहा मूर्त्यान्नता चक्रेण विराविता ततो सिंहा ततो देवान् सर्वदेवानुसंगिता तथैकतं भूपा देवदेवानुसन्धिता कैवीदाद्भुतां देवान् सर्वदेवानुसंगिता नेकैङ्गदायेतृमातृकृपा देवान् सर्वदेवस्वा तथा इति मातृगणा क्रुद्धं मार्दयन्तं महासुरा दृष्ट्वा मुक्तकृपातेन सुरदेवसैनिका पालयानान् प्राधिष्ठं सर्वदेवानुसंगिता रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ परतस्य शरीरता समुत्पत्ति मेदिन्नं सत्वपादिन्वासरा योधे च महागानिर्गवतिन्न महासुरा ऐन्द्रियगिरिसमारूढा वैष्णवी गरुडासना तत्र देवा ततो देवान् सर्वदेवानुसन्निधा अस्मिन् पातोत्तरा देवान् सर्वदेवानुतन्द वैष्णवी समरे चैन्दा चक्रवेन जिग्वादजा गदया ताण्डिवासितम् ऐन्द्रियगिरिसमारूढा वैष्णवी चक्रभिन्नस्याचक्रवतस्य भावितै सहस्रातो जगद्व्याप्तं तत्प्राणै महासुनै शक्त्या जघानि कौमारी वायराही तथासिना महेश्वरी त्रिशूलाना रक्तबैजन् महासुरा सा चापि गदया सत्या सर्वैरन्वावृता नातृकोपास्तमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्य हातस्य बहुधा सर्वशक्ति स्वावृति
पातयोन्मयदुक्ते शवन्तेष्टन् वहासुरा उवाच काली चामुण्डै विस्तरणं वदनां कुरु मक्षसन्नासवातीर्थं सक्तवीर्णन् महासुरा रक्तबिन्दुरप्रतिक्षमतासक्तदेनान्वेगिना भाषन्ति चराराणे त्वत्तिष्ठन् भावत एवमेषा क्षयं दत्यातिश्रक्तो न गमिष्यति एवमेतत् सदा देवं सर्वकामार्तिसिद्धिदा मुखेन समुद्गता कवतिश्चिन्द्रवेतते अस्मिन् पातु तदा देवं सर्वदेवानि संगिदा मुखे समुद्गता यत्त्वा समतेरनुसमिता अतः तस्य च चामुण्डा पापो तस्यात् शोणित देवी सुलेन वज्रेणावली राजिस्वादिभिः जगान रक्तबीजं ता चामुण्डी शापशोभिता शापपात महापृष्ठेर्वतस्यन् समाहिता रक्तस्या महीपाला रक्तबीजो महाशुरा ततष्टोहर्तां देवां क्रवश्चे नुवानिपा तेस्तमात्रगडो जातो नवस्तुण्डो नरोद्धता इति मार्कण्डेयपुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी महात्म्यो अष्टमोऽध्यायः। नमश्चण्डिकायै। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमिख्यानं भगवान् भवतं मम दिव्याश्रितमाहतम्यं रक्तबीजावदाश्रितं भूय विच्छाद्वतं श्रोहं श्रोत्रक्तय निपादिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भे जाति सोबिनम् अदो तस्मिन् चकारे ऋषिरुवाच चकारकोपमातुरं रक्तबीजे निपादिते शुम्भासुरो निशुम्भस्याहिव तस्यन्न चाहवे हन्यमानं महाशन्यं तैलोक्यामर्षमुद्भवान् अभ्यधावत् ततो मुख्योत्तरा सुम्भेशसेनया तस्य ग्रातस्तथा पृष्ठः पार्श्वयोऽसौ महाशरा श्रेष्ठो पुष्टो गोर्धं चाशुवदेशिन् महायो अजगामा महावीर्य शुम्भोऽपि शलावृता निहन्तुं चण्डिकाकोपत्कृत्वा युद्धमार्तिभिः ततोऽसु युद्धात्मतो देवान् शुम्भनिशुम्भयो सर्वर्षमति योग्रं योतयो सन्न पार्वतो पिच्छेन्दाजर्वादेनं सर्वते सा निसौवृत खण्डयामास चङ्गे शूरस्त्रिरेतुर्महासुरा निशुम्भो निःसं खड्गा चर्ममाहदिशा प्रभाम् खण्डमासानि मूर्धन्ये सिंहनातिर्महानुतां खण्डिते वाहने देवी क्षुरप्रेरणा समान्वत्तमं निशुम्भयासु सच्छेदा चर्मस्कङ्काधिचण्डिका छिन्ने धर्मादिकर्कण्यचुवत्तिश्चिन्महासुरा अक्यतासौ तथो देवीं सर्वदेवानुसन्धिता सोऽपि दिव्याकृता दिव्यङ्क्रियाता निवेष्टया तथा परसु हेमन्तं कवदेवानुसङ्गिता सिंहकान्तेन मूर्धेन कवाते सन्न सर्वदा अस्मिन् पाते सुभादेवं सर्वदेवानुसन्धिता तस्मिन् पातिर्भूमो च निशुम्भो भीमि विक्रमे भार्यन्ते क्रुद्धं च प्रवन्तिं हन्तुमिक्रम संविदा रामयन्ता समालोक्याकवतिश्चिन्न धावति शब्दसाधं स चापिं ता दुग्धभाचिन्वामृता तमस्य दैत्यसैन्यानां तेजोवादिग्वाविना तथा सिंहो महानादादित्यसेवा निशावृति पुरायामाश गगनं च तथैव ता दिशो दिशं ततः काले समुपद्या गगनं ताश्रमान्विता करभ्यं तन्निनादेन कवत्यश्चिन्दातिरोहिति हट्ट हट्ट महाशिवं सुदूती चकारः चाशिब्दय सुभाते जय शुम्भाकोपार्पुरायुवते दुरात्माने तिष्ठे दीर्घवातस्यन्वाङ्कुता ततो ग्रीवाक्यभौतिजं देवलोसं संचिता सुवेन नगत्या शक्ति सामुत्वा ज्वालाति भीषणा अयन्तीं चण्डिका बद्धो निराचत्रन्वहुत सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयत्र निर्गतिदासितो घोरो निमत्तिश्चिन्धिपात्रे शुम्भाकृतो देवी शिवतिश्चिन्दावते शिच्छेदासास्रेष्यो सदश्चा सहस्रश तदा सा चण्डिका कुद्दासुलेन जिघासतं सा च धूम्रचक्लिनितिमतेमा निषन्दिता ततो शुम्भनिशुम्भो नाहवतश्चण्डभावते काकी देव चा देव सर्वदेवानुसन्धिता तस्य निष्कामतो देवाप्रभस्यावश्यत्रवा सच्छेदा खड्गेन तरोतुसिन्नभूमि तथा सिंहाख्रवाद्गोलं तु सदिष्टं शिरोधरम् असुरभ्यातस्काली शिवदूती तथा पुरा कौमारी शक्तिनिर्भिषा केचिद्दिवन्त्रमहासुरा ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तयोनन्ये निराकृता महेश्चेतशूलेन भिन्ना तुष्टन्नता परे वाराही तुण्डघातेन केचित्तुन्नकृतामुभि खण्डं छण्डं च चक्रेण वैष्णवा दानवा कृता वज्रेण चिक्ता देवं तथा परे केचिद्दिवातराकवत्यसिन्नरावदा अच्छिदाशा परे काली शिवदूती मृगाधिपै ओमिति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माते नवमो अध्याय। नमश्चण्डिकायै। ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहिनी नेत्रं धनुसरियुक्ताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि हृदेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भनिहतं दृष्ट्वा भातरं प्रणतास्मितां हन्यमानं बलं चैव शुम्भाकृतो प्रभाद्विषा बलावादे प्ररोतिष्ठ तं दुर्गे गर्वामहम् अन्ये सम्बलमाश्रित्या युद्धे ज्ञातिशोभिनम् ततो देवी ततो दिव्युवाच एकैवाहं जगतश्च द्वितीया का ममापरा पश्यातं दृष्टमावेतं विना सन्तमतिद्वया तथा समस्तथा दिव्य ब्राह्मणी प्रामुख्यालयम्
तस्य दिव्यास्तनो दिव्याकवतस्य तथाम्बिका दिव्य उवाच अहं विभूत्यया बाहुभिरीराजातरोधिता तत्र संगृह्य मे शुद्धं तिष्ठतो स्थिरो भवा ऋषिरुवाच तथा प्रवर्तते युद्धं दिव्यासुम्भस्य शोभने पश्चातं सर्वदेवानां मुसूनां तथाम्बिका सर्वर्षेषिते सव्याद्गवत्यस्यन्ददारुणै तयोर्युद्धाभिबुध्यतं सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यास्तानि शतासो मुमुचो नाथिदम्बिका पञ्जातानि तश्चिन्नाद्गवयसङ्गाति कर्तिभिः मुक्तानि तेन शस्त्राणि दिव्यानि महेश्वरी भवञ्जालीलचोद्भ्यां गवत्यश्चन्द्रदाभिः तथा सरस्वती देवी मच्छाद्यसरोऽसुरा सापि सोतोत्कता देवी क्षुण्णशिन्नान्नशोकुषु छिन्नेदानुक्षदैत्येन्द्रा शवतिश्चिन्ददायते छिच्छेदा देवी चक्रेणा तव सन्नाकरे स्थिता ता खड्गमूदुरया सन्चन्द्रं च महानुतम् अवधावत्तदा देवी दैत्यनामतिर्वेस्तरा तस्य पादत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते शवातिष्ठं चण्डिके सातिसाविदम् ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा अभूं निर्वतो तस्मिन् गन्धर्वो सलिलं जगु तवातष्टेन्नतो मध्यं नादुतश्चरो गणा अयो पुण्डश्चतराजोरसुरो बुद्धिदिवाकरा जलजा शान्ता च दिवसिन्ना महेश्वरा इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमो अध्यायः। नमः चण्डिकायै। ॐ बालरविद्युतिमिण्डुकिरीटां तुङ्गकुचाङ्नयनत्रययुक्तां स्मरे मुखीं वरदाङ्कुशे पाशाभीतिकरं प्रभजे भुवनेशिम्। ॐ ऋषिर्वाच दिव्याहते तत्र महाशुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावाग्निपुरोगमस्तां कत्यायनीं तोष्टुप्रभाश्चितापाविकासुतासे बभुतानुताशा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महिष्वरूपेण यथा सितासि आपस्तरूपस्थितरात्रेतं तवैश्यते कुर्नुद्रातिवीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरत्नवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्तं वै प्रसन्ना भूम्युक्तिहेतो विद्या समस्ततोदा देवी वेद्या स्त्रिया समस्त सकला जगता चदोत सर्वभूत यदा देवी सर्वभुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता तुता देवदं प्रवतस्न्द्रमोक्तया सर्वस्या बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गा प्रवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कालाकष्टादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वासपारुतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्ता पवित्रायर्परायणे हरवर्षति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्ता विना नास्ते ब्राह्मणी रूपधारिणी कौशाम्बाचारिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलाचन्द्रहिधरे महावृका विवाहिनी महेश्वरीस्तरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुर्कुट्टुरे वृत्तिं महाशक्ति धरे धरे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदा शक्ति पद्मपायुधमावृते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहतो चाग्रुरे चक्रे वसुन्धरे वसुन्धरे वाराहरूपिणे जीवे नारायणी नमोस्तुते सिंहे रूपे ग्रवादे दहन्तु दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यात्राहिते देवी नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्ये सहस्रे नोज्ज्वले वित्तप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदीतिस्वरूपेण दैत्येन्द्रहाबले घोररूप महारावे नारायणी नमोस्तुते दष्टकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चण्डमुण्डमथने देवी नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिवदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरो भूतिवावृधामसि नेते त्वं प्रति देशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते पातते वदनं सौम्या त्रैलोक्यन्न भूषणं पातु ना सर्वमेतभ्यः कत्यायिनी नमोस्तुते ज्वालाकराल मृत्युस्जं कृपातिश्चन्द्रसूदनं त्रिशूलं पातु नो वेत्रे भद्रकाली नमोस्तुते हिन्यस्ति सोद्वा देवं सर्वलोकानुसन्धिता सुराते हृतं देवं सर्वदेवानुसन्धिता एकते कथितं भूपा देवी माहात्म्योत्तम पुनरप्यातिरोरन्ध्या रूपेण पृथिवीतले अवतीर्या
हनिष्यामि वैप्रचिन्तन्तु दानवान् भक्षन्तान् तानुग्रान् वप्रचिन्तान् महासना रक्तदन्ता भविष्यन्ति दादिमी कुसुमोपमा ततो मां देवतः सर्गे मत्तलोके च मानवा स्तुवन्तो वरिष्यामि सततं रक्तदन्तिका भूयच्छंसाकृतं च वैकवत्यश्चन्द्रमानिषि मुनिभिः सतुता भूमो समत्यश्चन्द्रवादिरा तथा सतेन नेत्राणां श्रीचन्द्रनिर्मुत कीर्तिश्चन्यमनुजा सा सिद्धिं चातुराजता ततोऽहमखिलं दोकाकवत्यश्चन्द्रभावसि भरिष्यामि सुरादिज्ञकवतस्य प्रणाधरे आकाम्बरेति विख्याति तदा संवेदुमाभि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यमहासुरा दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च यदा भीमारूपं कृत्वा हिमाचले पच्छति वाचन्ति वीनो न चत्रकान्निर्मावता तदा मां मुनयः सर्वे तत्कृतान् मूर्तया भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रूढख्यतो लोक्ये महाभादं करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सख्येतु सप्रदा त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरा भ्रमरीति च महद्लोकवतश्चन्द्रतावते इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्ता भविष्यति तदा तदा वर्तिष्यामि करिष्यामि कृपावता इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तादृशोऽध्यायः। ओं नमः चण्डिकायै। ओं विद्युद्दां समप्रभां मृगप्रतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैचक्रगदाशिखेटविशकं चापं गुडं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ओं दिव्युवाच एभिः सुतैः समं नित्यं सोतयन्तो क्षमाहितः तस्यायां साकलं बाधा नाश इष्टं रुवावृतं ततो देवं ध्रुवदेवानिघात्रं कीर्तिष्यामि वैद्यं बाधं शुम्भनि शुम्भयो अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैकतेशजा स्वयन्ते चैव नो भक्त्या जोयते सन्नमुत्तमं नाते खां कृत्सुतं देवा किशद्दश्चन्नजापदा भविष्यातीन्दरिद्रायं चोक्ते वाचिशाननं शत्रुतो नाभयं तस्यादाशतो वानराजतः तथा दष्टाकृतौ देवं दशसन्नन् भविष्यति तस्मन् वेत्ता कृतौ देवा प्रतिदिव्यं समाहितै ओसौ सर्गानशेषस्तु महामारी समुद्भवा तथा देवा तथा दिव्यं चोत्तदेवान् सदावता तत्र देवा पथा तेतन् सङ्गदीवातिदावता तदा नावामितो देवं सन्ददेवानिषन्दिता बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्यो महोत्सवे सर्वं देवा तथा मुच्चर्वं सग्रवेचता जनता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतिक्षम्यमामिता दत्तावग्निहोमं तथा कृता शरत्काले महापूजा क्रियते या च वर्षिकी तस्यं व्रतञ्चोत्तं च भक्तिसिद्धं समाहिता सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन्धान्यासुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा सतैस्मयदितं तथा चोन्नन्दाशुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् रूपवा संशयं यन्तो कल्याणं चोपपद्यते अन्ते चाकुलं पूषं महात्म्यं सुभावितं ओ सुकृतावृत्तिक शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुष्प्रदर्शने गावीडासु चोग्रासु महत्तस्यं समाविता बालग्राभिभूतानां बालानां सन्तिकारका संघेतभेदे च निर्णाना मैत्रीकरणमुत्तम द्रवित्तनाम शेषेण बलहानिकरापरा राक्षसो भीतवीचासं पठाने द्वन्द्रासन सर्वमेतच्छतं सन्निधिकाग्वाकत वसो सुरूप्यादधूपश्च गन्धीतिवस्वावत विप्राणं भोजनैर्होमे सुवतिस्सिन्धिरावत अन्ये काभिवातेदं प्रदाने स्वाविता इतिर्मे क्रियते तस्मिन् दुरत्वे तैन्वासुते सुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति अच्छं करोतु भूतेभ्यः जन्मानं कीर्ततं मम युद्धेषु चरितं यन्मे कवत्यस्सिन्धदेवता ओतस्य तावता देवं सर्वदेवानुसन्निधा एततापादिशापापि सङ्ग्रामे च भृतादुतः सर्वा बाधासु घोरासु वेदव्याधितिरोपता अस्मरे सार्वता तेदान् नरो बुच्चन्द्विकाविता मम चौगतरा देव क्रमते वानिसन्निधा ऋषिरुवाच योक्त्या सा भवती चण्डी चण्डिका च निविक्रमा पश्यते कां देवानां ततो निर्बन्धधीयत तेऽपि देवासुता देवं सधीकारं तथा पुरा यज्ञभागाभुजा सर्वे शक्रवीनान्हुतार्या तस्य देवस्य निहतो सम्बदेवापुतावत सङ्गैश्चैवासुता देवं सैव कालीमभावित महाकाल्यं महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव निर्वातुतामित स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले श्रीराम देक्वा चवत्यश्चन्द्विभावते एवमुदा पूजिता देवा पुष्पधूपाग्रभाजता राते पितृपुत्रश्चामति धर्मगतिवासवितमानि खण्डे पुराणे श्रावण के मन्वन्तरे देवी महात्म्य द्वादशोऽमो अध्यायः। ओं नमः चण्डिकायै।
ॐ बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशवराभीति ध्यायन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतते कथितं भूपा देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभाव सा देवी धार्यतं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते विष्णुमायात्प्राविधा तया तथैव सौम्यस्या तथैवन्य विवेकिना मोहन्ते मोहितश्चैव मोहितन्ते चापरे तमुपाहि महाराजा शरणं सर्वमेश्वरी आराधिता सैव निर्णाणं भोगवश्यासुरापृता सर्वदेवासुता देवं सर्वदेवानि सन्ध्या मार्कण्डे उवाच इति तस्यावचा श्रुता सा नराधिपा मणिपत्या महाभागा तामतिं शशियाव्रतां विनिष्ठुण्यतिवातिर्राज्यपाडेष्वेवचिता यगाहं सद्यभूतस्तं पश्ये श्री महामुरे दर्शनात् विश्राम्यानन्दे पुल्य संसिता सा च चन्द्राकवेतं न सुवतिस्सिन्धजापिना अपर्णा चक्रवेतस्या पुष्पधूपादिवङ्गरे निराहरौ यताहरौ तनस्माकौ समाहितौ तादृशस्तौ बलिश्चैव जगत्यस्सिन्धशोभितम् एवं समराधियोत्यं गवतिस्सन् महात्मा परितुष्टा जगद्धाति प्रक्षम्प्रा चण्डिका दिव्य उवाच यत्प्रवत्ते त्वया भूपा त्वयत्मनुपनन्दना भवत्ता प्रावृतं सर्वं परितुष्टा ददामित मार्कण्डे उवाच ततो वा प्रियो राज्यामन्वितिष्यन्न जन्मनि अत्रैव चानजं राज्यात् शत्रुर्वावृता सोऽविवेक्ता ततो ज्ञानं बभ्रेग्मासन मानसा अमृता प्राति प्रज्ञा सा सुगतिश्चिन्द्राकरं दिव्य उवाच स्वल्परोगावृतो निप्तं सा राज्यं साधुवावतं हत्ता निपुणमखिलं तत्रन्तं भविष्यति मृतस्या भूया सप्यां जन्मदेवानि सन्निधा एतस्मिन् क्वाकिस्घतवशेन भूमि भविष्यति वात्सर्यचार्क्वा ते वंशवतश्चन्द्रवाचिता प्रवक्ष्यामि सिद्ध्येते तं ज्ञानं च ममिष्यति मार्कण्डे उवाच इति दत्त्वा ततो देवी यथाभिलषितं परम् अभ्युन्ता सद्यो सात्त्वमिकवत्यश्चन्द्रविता एवं देव्या परो लुब्धा श्रुता क्षात्रियाश्वा सुजगम्मा समस्तद्या सामति भ्रावृतामुनु एव दिव्या सला लुब्धा श्रुता क्षात्रिव्यावृता सुजगम्मा समस्तते सामति सावृतं ओं क्लीं ओम् इति मार्कण्डे पुराणे सामणिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशे अध्याय नमश्चण्डिकायै।